Hello and a warm welcome to South Asia Today, where we bring you in depth insights into the key events shaping South Asia. I'm Shivangi Mishra, and here are today's top stories. Milk farming powers India's rural economy. Bangladesh garment factory owners welcomes reduced US tariffs. And Pakistan's control keeps Gilgit-Baltistan underdeveloped and marginalized. Let's begin the show. India's White Revolution, launched as Operation Flood in the 1970s, transformed the country into the world's largest milk producer. It strengthened several cooperatives, improved rural incomes, and modernized dairy infrastructure. Today, over 80 million farmers are engaged in dairy farming, making it a key pillar of India's rural economy. Take a look. India is no longer just a land of small farmers and village dairies. It is now the world's largest milk producer, supplying nearly to 48 million tons annually to meet the needs of over a billion people. Milk moving from backyard pots to automated plants and from local markets to national brands. The White Revolution of the 1970s reshaped Indian agriculture, giving farmers steady incomes and global stature. Gujarat's Amul proved how cooperatives could empower millions. Uttar Pradesh in northern India emerged as the largest milk producing state, linking small kettle owners to cities. In Rajasthan, dairy became a lifeline in arid regions, while Punjab's farmers diversified beyond wheat and rice through cooperatives like Verka. At Sandhu Dairy Farm in Ludhiana, dairy farming has entered a modern era. Manual milking has given way to advanced machines and digital systems that monitor each cow's health, feeding, and milk output, enabling informed decisions and steady, planned growth in productivity. एज ए ब्रीडर मैं पूरे मतलब हमारे पास आते भी हैं दूसरी स्टेट से लोग, जैसे अभी एनडीडीबी के लोग आए हैं, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के, उसमें हिमाचल के मतलब जो इंस्टीट्यूशन है वो हमारे से बोले लेके गए हैं, गाय लेके गए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं ये जो सीमन है, जो आपकी जो प्रैक्टिस है, ये सारे देश में फैलाई जाए. Punjab's economy rests on agriculture, and dairy has become a key growth sector, attracting a new generation of farmers. In modern dairy farming, animal welfare is also smart business. Balanced nutrition, clean environments, and regular veterinary care reduce stress and directly improve milk quality and productivity. गाय को तूरी और लूसन पाता हूँ, वो मक्की का होता है, और दाना पानी भी पाता हूँ. उसको टैंक में मिक्स करके, अब फीड का नाम अलग है बताता हूँ. एक कारगिल फीड हो गया, एक एफआई फीड हो गया, तो दोनों फीड मिक्स करके गाय को पाता हूँ. यहाँ जगरांव विजिट करने आए. हमने यहाँ अलग अलग नस्ल की गाय देखी, जैसे कि होस्टन फ्रीजन है, जर्सी है, और अच्छी प्रजाति की गाय हैं और बहुत अच्छा दूध देती हैं. 60 लीटर 65 लीटर दूध देती हैं, जो कि और सब जगह से अलग है. यहाँ सबसे अलग है इनका जो खाने का खिलाने का तरीका है, जो पशुओं को खिलाते हैं, ये इनका खवाने का तरीका अलग है, सिस्टम इनका अलग है, उस वजह से दूध ज़्यादा दे रही हैं. Today, a growing number of dairy farmers sell their milk directly to commercial processing plants. In Punjab, Verka, run by the Punjab State Cooperative Milk Producers Federation, connects farmers to large markets. Through strict quality checks, advanced processing, and constant monitoring, Verka ensures safe, high-quality dairy products for millions of consumers. ये सारी उनके दिशा निर्देश के अंदर हम लोग काम करते हैं, और 1 रुपये में से 75 पैसा हम वापस किसानों को प्रोवाइड दे देते हैं एज ए बोनस. जैसे भी इनपुट्स में हम उनको फीड देते हैं, मिनरल मिक्सचर देते हैं,
मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, सीड प्रोवाइड करते हैं, वो सब्सिडाइज बेस पे, और वो हमें मतलब हम उनको एक तरह की सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अगर हम कोशिश करते हैं कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो उसको मिनिमाइज़ किया जाए। From village sheds to fully automated plants, India's milk story is a quiet revolution. What began to support farmers has become a national powerhouse powered by cooperation, technology, and dedication. Moving on, Bangladesh's garment industry is welcoming relief after the United States reduced tariffs under a new trade deal, easing pressure on exporters reliant on the American market. Factory owners say the 1% cut, along with exemptions for US sourced materials, could boost competitiveness and protect jobs. Still, industry leaders urge caution, calling for better planning, stronger supply chains, and continued reforms to sustain growth in an increasingly competitive global landscape ahead today. Bangladesh's crucial ready-made garments industry has welcomed the decision by the United States to reduce tariffs under a newly negotiated bilateral trade agreement, offering much-needed relief to exporters and manufacturers who depend heavily on the American market. In a significant development aimed at strengthening trade ties, the US has agreed to cut tariffs on Bangladeshi apparel imports by 1 percentage point, bringing the rate down to 19% from the 20% imposed earlier during the Trump administration in August. The agreement grants exemptions for certain textiles and garments made with US-sourced materials, a step industry leaders say will strengthen bilateral supply chains. The move offers relief to garment exporters in Bangladesh grappling with rising costs, tough global competition, and economic uncertainty, with even small tariff cuts expected to improve competitiveness and protect market share. Garment factory owner and director of Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, Moyuddin Rubal, welcomed the move but urged the industry to stay cautious and plan for the future. This will be really a good advantage if we can do it in practically. There are some challenges as well to implement it, but the bottom line is this is a good advantage if you can take it. Because for example, just an example, like if you are reducing your reciprocal tariff by 1%, it's 1%. But if you can make your product with that cotton from USA, you can reduce by 19%. Of course, this will be a big impact in practical if you can implement it. Despite the tariff relief, Bangladesh's rates remain marginally higher than that of neighboring India, whose imports into the US are set to face an 18% tariff under a separate agreement reached last week. However, officials know that India deal is still subjected to further negotiations before it is finalized. The ready-made garments industry continues to serve as the backbone of Bangladesh's economy. The sector contributes over 80% of the country's total export earnings and provides employment to nearly 4 million workers, most of whom are women. It also accounts for roughly 10% of the nation's gross domestic product, making it one of the most critical pillars of economic growth and stability. Every reduction will be an added advantage for our competition. But of course, if it was like 2% to 5%, it would help more. But even in 1%, like after the reduction of 1%, now we are to the level of all of our competitors except India only, who is basically getting 18%. But still, the 1% reduction will help. The trade development also came at a politically sensitive time for Bangladesh. The country went to the polls on Thursday, February 12, to elect new leadership. Bangladesh had been under an interim administration since August 2024, when former Prime Minister Sheikh Hasina left the country and sought refuge in India, where she continued to stay. While challenges remain, the agreement is being viewed as a step forward in reinforcing trade relations and supporting one of the nation's most vital industries.
Now we take a look at some happenings in Asia in a segment called Asia Watch. Indian carmaker Tata Motors Passenger Vehicles launched its first manufacturing plant for UK Jaguar Land Rover unit in southern Tamil Nadu state this week. Last year, a cyber attack on JLR, Tata Motors luxury unit and Britain's largest carmaker, hit sales and led to a $177.2 million one-time charge. The attack last year forced JLR to halt production for 5 weeks up to early October. JLR accounts for up to 80% of Tata Sons' revenue, with the domestic business forming the remainder. Shop owners and merchants protested in Iraq's Baghdad against new customs tariff increases, warning the measures will push up prices for consumers, as some traders closed their businesses in a show of solidarity. Protesters gathered near Iraq's customs authority in the capital, holding signs calling for a nationwide shutdown of commercial markets from Sunday. Demonstrators stood near closed shops as riot police were deployed in the area and traffic moved through nearby streets. In Mosul, shops also closed as part of the protest. Iraq's General Authority of Customs said there would be no increase in tariffs on food, medicine and basic commodities. However, there will be a revised customs tariff rates for other products ranging from 0.5% to higher percentages. These tariffs apply at all border crossings and customs centers, the Iraqi government said, and will remain in force unless amended or suspended by the cabinet. Beijing residents said Japan's recent election outcome could affect China's ties with Japan. One resident said the vote may reflect the feelings and views of a much larger part of the Japanese public, while another expressed hope that tensions would ease. Japanese Prime Minister Sanai Takaichi's coalition swept to victory in an election on Sunday, February 8, paving the way for promised tax cuts and military spending. Takaichi sparked a diplomatic row with Beijing in November after she said a Chinese attack on Taiwan could amount to a survival-threatening situation for Japan and potentially trigger a military response. China claims sovereignty over democratically governed Taiwan. The island's government rejects that claim. The people of Pakistan-occupied Gilgit-Baltistan continue to endure decades of political neglect under a deeply flawed and imposed system of governance. Administered by Pakistan since 1947, the region remains deprived of genuine representation and decision-making power. An outdated framework crafted without local consent places real authority in the hands of the Pakistani establishment, leaving the people disillusioned, marginalized, and trapped in a cycle of exclusion, underdevelopment, and broken promises. We have a report. Decades of neglect have pushed the people of Pakistan-occupied Gilgit-Baltistan into deep frustration and anger. The system imposed here has focused on maintaining control rather than delivering development or justice. Local voices remain unheard, real representation is missing, and public rights continue to be sidelined. With no effective forum to address grievances, resentment has grown steadily, particularly among the youth, who now openly question a structure that denies them dignity, ownership, and a future. पाकिस्तान ने एक ऐसा निज़ाम मुरतब किया है कि इस निज़ाम का टोटली बेनिफिशियरी बने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और उनकी मजबूती पे यहाँ पर बरकरार रहे। इसलिए यहाँ पर ये जो मौजूदा निज़ाम है, ये निज़ाम फरसुदा निज़ाम है। इस निज़ाम से यहाँ के स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान से नाला नजर आते हैं और सोशल मीडिया की वजह से यूथ इस वक्त फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया आने के बाद दुनिया के अंदर जो निज़ाम मौजूद है उस निज़ाम तक लोगों की रसाई मौजूद है। इस रसाई के सबब गिलगित-बल्तिस्तान के लोगों को ये पता है कि ये आज भी दुनिया की आखिरी कॉलोनी में रह रहे हैं जहाँ पर कॉलोनियल निज़ाम मौजूद है। गिलगित-बल्तिस्तान में असल हुकूमत पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है। यहाँ पर एक सो कार्ड सा प्रोविंशियल कर्ज का सेटअप दिया गया है, बज़ाहिर एक वजीर आला बनाया गया, बज़ाहिर एक गवर्नर भी दिया गया, बज़ाहिर 5-6 वज़रा भी होते हैं, एक कैबिनेट भी होती है, हुकूमत भी होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या कहते हैं ताकत का जो सरचश्मा है वो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, खा वो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो या सिविल ब्यूरोक्रेसी हो। The growing demand from Gilgit-Baltistan is clear. People want control over their own lives and future.
If Pakistan is unwilling or unable to address these needs directly, it must at least establish a genuine legislative framework that empowers local institutions. At present, the region is being managed like a grant-in-aid territory, dependent and constrained. Without constitutional clarity and real devolution of powers, daily life remains uncertain, limited, and deeply unjust for its people. गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को गिलगित बल्तिस्तान का उबूरी आइन बनाने की जरूरत है। यहाँ पर सिर्फ डिफेंस, करेंसी और फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान अपने पास रखे, बाकी तमाम तरह इख्तियारात गिलगित बल्तिस्तान की जो मुकामी असम्बली है इसको मुंतकिल करें और इंटीरियर बुनियादों में पाकिस्तान के साथ एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो। उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एनएफसी में गिलगित बल्तिस्तान का शेयर डिक्लेयर हो, क्योंकि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान जो चल रहा है, जिस तरह एनजीओस ग्रांट देती है गरीब ममालिक को, अफजदा ममालिक को, इसी तरह ग्रांट इन एड पे चल रहा है। पाकिस्तान ने खुद अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इस इलाके को कमजोर रखा हो और ये कमजोरी अपनी मजबूती के लिए रखा था। अब अगर यही निज़ाम बरकरार रहा तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। Beyond political control, everyday life in the region reflects years of neglect. Basic infrastructure remains inadequate, roads are broken, healthcare facilities are limited, and educational institutions lack resources. Economic activity is minimal, leaving the youth with few employment opportunities and forcing many to migrate in search of survival. Development exists largely on paper, while the ground reality is defined by isolation, underinvestment, and administrative apathy that continues to hold the region back. A new road is opening new possibilities in Jammu and Kashmir's border belt. The Bahari Patan Jalas Road, constructed by the Border Roads Organization in Rajouri Poonch, is proving to be a game changer for connectivity and development. As a crucial alternate route, it is improving access, enhancing safety, and bringing remote border villages closer to the mainstream. Have a look. A wave of development is reaching the far-flung border areas of Jammu and Kashmir. In Rajouri Poonch, the newly constructed Bahari Patan Jalas Road, built by the Border Roads Organization, is emerging as a critical lifeline for local communities. Stretching nearly 213 kilometers, this strategic route now serves as a vital alternative to Jammu-Rajouri Poonch National Highway, improving connectivity, travel safety and access to remote border villages. बेसिकली जो BRO इस रोड को कंस्ट्रक्ट कर रही है, ये बैरी पट्टन से पुंछ जल्लास तक जाएगा। इसको बैरी पट्टन जल्लास रोड कहते हैं। बॉर्डर रोड है ये, बेसिकली इंटरनल कनेक्टिविटी के साथ साथ रूरल एरियाज़ को कनेक्ट करता ही है। एक तो ये अल्टरनेटिव हमें कनेक्टिविटी देगा जो लोग जम्मू से पुंछ की तरफ या पुंछ से जम्मू की तरफ ट्रेवल करेंगे। दूसरा, जो हमारे इस एरिया में टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे बाबा बेरम शाह यहाँ है, मंगला माता का टेंपल पास है, वीरभद्रेश्वर का टेंपल है, उसके बाद हमारे यहाँ पीर शालक की दरगाह है। काफ़ी सारी ऐसी प्लेसेस हैं जिनको ये कनेक्ट करते हुए ये पुंछ तक जाएगा। तो ओबियसली ये बॉर्डर टूरिज्म को और रूरल टूरिज्म को भी बढ़ावा देगा, साथ साथ में लोकल लोगों को भी फैसिलिटी होगी। A fresh chapter of opportunity is unfolding in the border districts of Rajouri and Poonch. The road project has brought employment to villagers who earlier had no choice but to migrate daily in search of work. At the same time, improved access is opening the region to visitors by connecting prominent religious and heritage landmarks including Mangla Mata, Shahlak Shrine, Veerbhadreshwar Temple and Jhangar Usman Memorial, strengthening livelihoods through tourism-led growth. लेबर को सुबह से लेकर शाम तक काम करने में थोड़ा सा उत्साहित रहते हैं, क्योंकि उनके घर के पास काम हो रहा है। अभी धीरे धीरे काम बढ़ता जाएगा तो फिर वो और भी लेबर एम्प्लॉयमेंट उनको औरों को भी मिलेगा। अभी जितने भी लोग हैं यहाँ पे सुबह अपने स्टार्टिंग करते हैं, सुबह 8 बजे से काम करना शुरू करते हैं, शाम के 5 बजे तक लगातार अपना काम करते हैं, बड़ी मेहनत से करते हैं और क्वालिटी
के साथ करते हैं। टूरिस्ट की अगर बात की जाए तो हमारा जब रोड थ्रू हो जाएगा, जब हमारा काम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद झांगड़ है, हमारा उस्मान मेमोरियल है, वहाँ पे लोग विजिट करने आया करेंगे प्रॉपर। ऊपर हमारा वीरभद्रेश्वर का रोड है, वो भी हमारे रोड से ही कनेक्ट हो रखा है, तो वहाँ पे भी लोग जाया करेंगे, तो टूरिज्म और बढ़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल कम होगी, क्योंकि अब हमारा सेक्टर जहाँ जहाँ काम चलेगा तो वहाँ पर लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, और लेबर की ज़रूरत पड़ेगी तो रोज़गार उनको भरपूर मिलेगा। Progress is no longer a promise, it is now a reality for remote border villages. The newly developed road is emerging as a catalyst for economic progress, opening doors for smaller enterprises and easing long-standing employment challenges. Villagers have welcomed the durable construction and upgraded infrastructure, calling it a much-needed change. हमें 3 साल हो गए हैं इस रोड पे लगे हुए काम करते हुए, और ये हमें रोड मिलने से हमारे बॉर्डर को और हमारे जो लोकल लोग यहाँ के हैं मज़दूर, ये पहले हमारी मज़दूरी करने के लिए यहाँ से हमें बहुत दूर तक जाना पड़ता था। इस रोड की वजह से हमें बहुत लाभ मिल रहा है और बहुत अच्छा हुआ है कि हमारे को मज़दूरी मिली है, घर के पास बहुत बढ़िया काम करवा रहे हैं। टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा सर, इससे हमारे जो है कि छोटे मोटे जो रोज़गार खुलेंगे, साथ में जो है कि यहाँ पर छोटे छोटे जो दुकानें खुलेंगी, टी स्टॉल खुलेंगे, और अपना यहाँ के जो लोकल लोग हैं यहाँ के टी स्टॉल वगैरह खोलेंगे, होटल खुलेंगे, जो यात्री बाहर से आएंगे यहाँ पे हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। Today, enhanced connectivity has finally linked remote areas like Jhangar, Ser Makri, Bavani and Kalsian. Locals have hailed the project as a historic milestone, expressing gratitude to the government and the BRO for strengthening safety, improving access and opening new opportunities for development and a more secure future. सबसे पहले तो हम केंद्र सरकार का दिल की गहराइयों से और बॉर्डर एरिया की ओर से धन्यवाद करते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़े लेवल पर जो ये रोड का काम चल रहा है, ये मोदी जी का धन्यवाद है और गडकरी जी का, जिन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट बॉर्डर के एरिया में दिया है। उसके उपरांत ये हम BRO का भी धन्यवाद करते हैं, जिनके इंजीनियर्स, जिनकी टीम्स ने बड़ी मेहनत के साथ यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां हैं यहाँ पर। यहाँ तक सवाल है कि अगर हम टेंडरिंग से और कंपेयर करें, ठेकेदार से कंपेयर करें BRO को, तो मुझे लगता है कि BRO का 100% ज़बरदस्त काम है और बड़ी क्वालिटी ऑफ वर्क है जो इनका अच्छा है। जो रोड ये बनाते हैं वो कम से कम 5 साल तक उसको कोई भी रिपेयरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। The Baharipattan Jhallas Road stands as a powerful symbol of Jammu and Kashmir's steady progress, especially in its border regions. By improving connectivity, livelihoods and security, the project reflects the administration's commitment to inclusive development. The Jammu and Kashmir administration, in coordination with the BRO, continues to bridge long-standing gaps, bringing growth, stability and confidence to remote communities while strengthening the region's path toward lasting prosperity. As we wrap up today's episode of South Asia Today, we thank you for joining us. We'll return next week at the same time with more insights and updates. This is Shivangi Mishra signing off on behalf of our entire team. Until then, stay safe and goodbye.